Namaste and a very warm welcome to all of you to the Blubworld's 4th Global Education Meet online. Today we are going to host the 112th roundtable that Blubworld has been doing since the lockdown began, and we have had more than 1,500 school leaders who came on this very platform, shared their ideas, opinions, perceptions, observations, innovations, and what all new they've been doing in the K-12 space, or to simply put it, what's new in schools. So today, when we initiate this very meet of global education, where we try to understand within the next 7 days what has changed in education forever and what has changed for a small little time. Because ऐसा बहुत सारे जनों ने बहुत सारी observations में बहुत बार बोला कि when the lockdown came in, it brought technology, and when it will go off, technology will also go off. दोनों स्पेक्ट्रम के एंड्स पर दोनों तरीके की बातें करने वाले लोग थे, बट यस, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हमें इन पिछले करीबन 125 एपिसोड्स में मिले. वी ट्राई टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज बाइलिंगुअल, सो आज के पूरे इंटरेक्शन में, पूरी बातचीत में यू कैन यूज इंग्लिश और हिंदी. अगर कोई तीसरी भाषा यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आई वोंट गेट इट, सो ट्राई स्टिकिंग टू इंग्लिश एंड हिंदी. एंड आज हम जिस जंक्चर पे खड़े हैं, जहां हम एक लंबा चौड़ा साल बिता चुके हैं विदाउट अ लॉट ऑफ एजुकेशन हैपनिंग, तो अब हमें क्या लगता है कि आगे आने वाला सेशन में क्या क्या नया होगा, और आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी जो आप अपने पीयर्स को या K-12 स्कूल लीडर्स को देना चाहेंगे. सो सिंस दिस इज द फर्स्ट राउंड टेबल, वी हैव स्ट्रक्चर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपर्ट टॉक. तो यहाँ पे हम आप अलग अलग फील्ड्स के एक्सपीरियंसेस लाएंगे और उनको हम सुन के, समझ के और K-12 लीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. वी हैव एन अमेजिंग लाइनअप विद अस टुडे. बस कोशिश कीजिएगा कि दिस इज अ टाइम्ड राउंड टेबल. So once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It is just to finish this activity on time, and we'll again try to give you the right time possible within the talk. If it's not possible, we'll take your views on email, on WhatsApp. But remember, we respect you a lot. So if you get muted, please don't get offended. So let's do a formal initiation of the Blubworld's 4th Global Education Meet. A very warm welcome to all of you. Let's talk about restarting education, some innovative strategies for the new session. क्योंकि अब नया सेशन चालू हो गया. आज करीबन पहला दिन है सभी का वर्किंग डे 2021 का. So let's make it more meaningful, more enjoyable, and more filled with ideas. Thank you so much everybody for being here on the platform. Let me invite the first guest for today, Professor RSS Mani, who's the Vice President of Institutional Development at ITM Group of Institutions, is the President of Bombay Management Association from Mumbai, Maharashtra. A very warm welcome to Professor Mani. The next 4 to 5 minutes are yours. A very warm welcome. Morning everybody, namaskar, and thank you Daksh for inviting me over this morning, and thank you Divya for all the superb back-end coordination. As you rightly said Daksh, we are going through a period of transformation. As is rightly said, all this adversity that we went through has created so much of opportunity, and I must first congratulate all colleagues in the teaching fraternity right from KG to PG for having risen to the occasion. इस जंग की हमने जो संघर्ष से अच्छी तरह से मुकाबला किया है, और हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम हम डिजिटल डिलीवरी कर रहे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन. As is very obvious from the screen, I seem to be the senior citizen among all of you young minds who are there in this room. And one of the things that I wanted to share this morning is, when you prepare students from KG right up to the 12th standard, they come to us at the graduation level and the post-graduation level. My institution is of higher education, the ITM Group of Institutions, which is over 30 years old, multi-locations in India. And add on, the Bombay Management Association, where I am the president for this year, focuses on executive education. So we in the higher education space look up to all of you, or some of you, in the K to 12 segment to prepare students for careers with us. So I'm going to spend some time giving you 3 major focus areas. The first thing that comes to mind, I feel, is we need to have a mindset change. In the primary education, we need to teach the children how to learn. I think our current system teaches children how to mug up, how to do rote learning, how to shut your eyes and recall things and put it out into a paper. We need to teach in the primary education segment
how to learn. When the student comes to the secondary, the student not only has to be taught how to learn, but how to apply what they have learned. Some bit of application, some bit of experimentation. So for example, if in primary we taught the children that let us grow some plant, we need to link it up to the fact that plants are green and green is a color. So instead of only teaching green as a color, link it up to plants. And when they come to secondary, teach them how to plant, how to take care of greenery, how to ensure that we have enough oxygen supply. And when the same students get into the college level education, we will link up all this to conservation, biodiversity, greening the earth, oxygen layer, and so on and so on. The example that I took was only to demonstrate that in primary education, we teach them how to learn. In secondary, we teach them how to apply what they learn. And when they enter college, we do one more thing for them. We teach them how to ask questions. I think asking questions is the starting point of innovation. Unfortunately, हमारे सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी फैकल्टी को हमने सवाल पूछा, अक्सर वो बुरा मान जाते हैं. वो कहते हैं, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? And therefore, we need to understand that this calls for a tremendous change in mindset. The teacher has to encourage the student to ask questions. So that was the first point which I wanted to make. The second point is what all of us have experienced is we've moved on to digital learning, visual learning. We have moved on to what is called a global learning platform. अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक किताब से सारी जानकारी पाएं. आज के तारीख में हजारों किताबें हैं, हजारों चैनल्स हैं, हजारों वीडियोस हैं और YouTube है और Google भी है. Therefore, whether you talk about Uncle Google or Auntie Google, Google is a source of information. I think the teacher has a role to play in converting that information into useful knowledge. So I feel the role of the teacher is now changed. We are no more the custodians of knowledge. Knowledge is available everywhere, but how to convert it into something meaningful, useful, and applicable is what is the role of the teacher. 10 साल पहले भी जब गूगल का बहुत प्रभाव हुआ था, सब लोग डर रहे थे कि टीचरों की नौकरियां कम हो जाएगी क्या, फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या. तो हम हमेशा मजाक में कहते थे और आज भी कहते हैं, भले 2G आ जाए, 3G, 4G या 5G, गुरुजी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. And I think that is the role that we need to understand for ourselves as teachers, as faculty. Last but not the least, my third point is any one of us who is in the teaching field must remember that we are not only teaching students subjects, concepts, theories, application, experiments. We have to teach them how to succeed in life. How to succeed in life using physics. Maybe how to succeed in life using anthropology. But I think the fundamental is how to succeed in life. Because teachers are the biggest role models and inspirers of students. याद है बचपन में जब हम हमारे बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते थे, हमारी एक ही इच्छा थी कि भले 4 घंटा बच्चे घर से बाहर जाएं, हमको भी थोड़ा आराम मिले from babysitting. That is how we started the journey of sending people and the children to school. But today, we need to remember that we have to make them good citizens of society. And my concluding point was, as teachers, we have to be role models. We have to teach them what I call the basics of ABC. And mind you, ABC here is not the alphabets, but for me, A is teach them the attitude of gratitude. Children must be taught right from day one to be grateful for what they have and not complain for what they don't have. The attitude of gratitude, be it your parents, teachers, society at large. The B in the ABC is be positive. We can always complain about the things around us,
But the question is, what have you done with the things that are there with you? How do you take a positive approach to life and make the best use and take the next steps? And the last one in the ABC is character. Character is not something you will learn in a classroom. Character for me is sanskar. And therefore, what is very, very critical as teachers for all of us to ensure that we produce best of citizens for the country in this restart mode is, let's remember, attitude of gratitude, be positive, and character building is something we need to focus upon. These were some preliminary thoughts I thought I would share with you. I don't want to be muted off, so I sign off over here. And thank you everyone for your attention. And I hand back to Daksh to continue the session. Thank you so much, Professor RSS Mani, for giving this morning an amazing start. सारी आपने जो बॉल्स हैं सही सही जगह पे सेट कर दी हैं ताकि अब डिस्कशन आगे बढ़ सके. So just to recap what you said, you started with where you right now give your services to 30 years old institutions जो देश भर में है, ITM institutions. And आपने कहा सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत है एजुकेशन में, that is teaching them how to learn. ये जो हाउ टू लर्न वाला कॉन्सेप्ट है ये स्कूलिंग में आता ही नहीं है. ये हायर एजुकेशन में जाके बच्चे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रियल लाइफ में जाके सीखते हैं. तो ये हम लोगों के यहाँ बहुत डिले हो जाता है कॉन्सेप्ट. Then finally recalling is the focus कि बस बच्चा याद रख ले, मगअप कर ले और उसको किसी एक दिन उल्टी कर दे is what is expected out of a child. हायर एजुकेशन में आपको बेसिकली सिखाना है आस्किंग क्वेश्चंस. ये हमारे समाज में सिखाया ही नहीं जाता. जब भी हम लोग सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो संस्कार उन्हें रोक देते हैं और रादर डिसिप्लिन उन्हें रोक देता है. तो हमें डिसिप्लिनेरियन नहीं होना है, हमें क्यूरियोसिटी को जिंदा रहने देना है. बिकॉज व्हेन वी ग्रो अप एंड बिकम प्रोफेशनल्स इन आवर ओन फील्ड्स, द ओनली थिंग that keeps us back or away from success is our loss of curiosity. क्योंकि हम नया कुछ जानना नहीं चाहते, नया कुछ करना नहीं चाहते, और जब यहाँ पे हम क्यूरियोसिटी को जगाना चाहते हैं तो वो जगती नहीं है. So this is the point where we need to remember कि बच्चे की एथिकनिक जो माइंडसेट है वो ना टूटे और वो रादर ग्रो हो. हम उसे तोड़ के डिसिप्लिन करने की कोशिश ना करें. डिजिटल लर्निंग, विजुअल लर्निंग एंटी गूगल होना नहीं सही है. आई थिंक उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें, बिकॉज दैट्स सो ग्रेट यूज टू यू एज वेल. 5G won't replace Guruji. And teaching how to succeed in life, कि बच्चा एटलीस्ट सारी चीजों को कनेक्शन में समझ पाए. साइलोज में अंग्रेजी, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिक्स ये सब ना समझे, रादर ही लर्न्स फॉर लाइफ. जो कि अभी यूनाइटेड नेशंस का सबसे लेटेस्ट एजुकेशन रेजोल्यूशन है वो यही कहता है, लर्निंग फॉर लाइफ. कि आपकी जिंदगी के लिए सीखिए, इसलिए मत सीखिए कि शायद किसी एक दिन कोई पेपर देना है. So thank you so much, sir, for adding these amazing perspectives to the discussion. Let me invite the next speaker for today, जो थोड़ा सा इसके अंदर intellectual मसाला और ऐड करेंगे और थोड़ा सा K-12 का exposure ऐड करेंगे. So let me invite Mr. Chandrasekhar DP, who is an author, TEDx speaker, and edupreneur from Bengaluru, Karnataka. So Chandrasekhar ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Good morning, Daksh, and thank you very much. Namaste to all the fellow panelists on this roundtable. It is a great privilege to be part of this, and as Daksh rightly said, kicking off the new year with, as we already have got used to, the digital media. I agree to Professor Mani for setting the context in such a fantastic manner, because he has, in a very categorical manner, touched about a lot of these things which are on top of the mind of every educator. Now, coming to the perspective from my end, I think it's important and inevitable to visit when we are thinking of what is going to be the new format of education post-COVID, or even now when COVID is still going on, is I think it's a very pertinent question to ask: what is education in its basic essence? In my perspective, education, apart from all the definitions and the schools of thoughts which are prevailing in the market, education consists of three things. Number one is the skills, where whether it is numeracy or alphabets or language, those skills, or the 21st century skills which we commonly come to understand as problem solving, critical thinking, creative skills, and all of that collaboration and other thing. But at the end of the day, they're all can be comfortably bracketed under the skills bucket. Now, that's one part of it. The second part of it is the socializing space.
So if you look at schools, when we were having schools the way we used to have pre-COVID, it was not just for assimilation and absorbing knowledge, it was also about getting experiences and exposures, wherein the socializing played an important role, whether it is on the playground or in the corridor or even in the cafeteria. So that's another important aspect of education, and that is going to be there pre-COVID or post-COVID. Third, and the most important thing, which normally in India and other parts of the world is often taken as the most important purpose of education, is the signaling. What do I mean by signaling? Is if I go through K to 12, then I am a educated person. Then if I go to a graduate school, then I am an undergraduate. Then if I go further, I'm a postgraduate. So these certificates which I keep gathering, they keep signaling to the market, whether it is like, for example, in case of a higher education institution, they will look at which school the boy or the girl is coming from, and that certificate matters, and that signal sends that okay, this boy can be given a seat. And then the boy or girl go further, and then the job market opens up and they start looking at that signal and say, okay, he's got a certificate from this institution, he or she is good enough, so let's do it. Now if you look at all these three things, the skill set and the socializing set as well as the signaling point, what is going to happen post COVID? That's the interesting conversation. And in my view, skill sets is no more the domain speciality or expertise of schools, because you have all these edtech corporations and companies who have started making, or rather unbundling, this bundle called skills. So you have Byju's of the world or Vedantus and other people. I have no affiliation to any brand, but at the end of the day, these are the people who are trying to tell you that okay, I will teach you the best way to learn math. I will teach you the best way to crack a competitive examination. Now they're not really focusing on socializing. They said my job is not that. I'm focusing on only on giving you knowledge. Second, now the schools post COVID, what's going to happen is school should not start fighting the same battle with the Byju's or anybody else, because this is one question which I kept asked very often everywhere, saying that what will happen to your school when these people are already taking over your students. And as you said at the introduction, when COVID came, technology came in, and when COVID goes, will technology go away? I don't think so. Schools have to clearly understand that their role is changing, their mantle is shifted. We still are the sole agencies for signaling. So you need to certify the child and then send them. So that is your domain. You still hold that. But you need to make the change in these two spaces, which is socializing and which is in the skill set. Now, let me talk quickly last three things, which is about what is the new role of a school. Now, we know that technology is here to stay. Hybrid model of education is going to happen, and there will be offline and online, which we call as phygital learning, right? Now, the question is, what about digital safety? What about phygital safety? Who's going to do that? That's the school's responsibility. Both in the offline space and in the online space, we need to make sure that our children, our young people, future citizens are taken care safe and secure. That's the one responsibility. Second, there are certain subjects and topics which we realize as adults we never were taught in schools. For example, financial literacy, basic personal financial management. This is something which we did not. Second, I mean, a good friend is here, Mr. Pawan. I know him because he does phenomenal job in entrepreneurship. What about children looking at entrepreneurship as a career opportunity? I mean, it's not about you graduate and then you get a job, and if you don't get a job, then you try to do something on your own and call yourself an entrepreneur. And if you don't make profits and you don't make numbers, then you call yourself social entrepreneur. That's not the way it works, right? So these are the things which we as institutions have to focus on. I think that is the new rule or the new normal for the schools. So physical literacy, digital safety, and last but not the least, trying to be an aggregator of all those variables and moving parts in the market for the young minds. Because I'll tell you, parents are the first teachers and teachers are the next parents. Both of us have to work hand in hand in making the child make sense of all these variables. Because I keep saying, when COVID came, it was a crisis on the planet, but children were going through a crisis within a crisis. Small kids who are in the age group of 8, 10, 12, they don't even understand why this is happening. Why are they locked up in the houses for days together, months together? So we as adults look at mental wellness.
and all these things. So I think this is what I would like to tell with respect to revisiting education and for going forward in the new normal. Thank you very much. Thank you so much, Chandrasekhar ji. To recap what you said, to summarize, आपने बात शुरू करी कि what is the essence of education. ये सवाल हमें वापस पूछना पड़ेगा कि what's the objective of it. पढ़ा रहे क्यों हैं, क्यों आप एजुकेशन के पीछे इतना एफर्ट मार रहे हैं, उससे निकलने क्या वाला है, या एंड पॉइंट क्या है, कहाँ पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए जर्नी शुरू की है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज हम उसके ऑपरेशंस में घुस गए, उसके मार्जिन में घुस गए, और हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ पैसा है, लेकिन हम ये भूल गए कि ये पर्पस या ये एक्टिविटी किस लिए चालू की गई थी. And that's where the real essence of the problem lies when we talk of education in a country like India. Then you talked about skills, कि अगर आप एजुकेशन के टुकड़े करेंगे तो 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगी स्किल्स, सोशलाइजिंग एंड सिग्नलिंग या सर्टिफिकेशन जिसे आप कह रहे हैं, और दूसरी होगी सोशलाइजिंग जो कि स्कूल काफी हद तक कर ही देता है, एंड पहली है स्किलिंग. When we talk of स्किलिंग वो इतना स्पेशलाइज हो जाता है कि स्कूल उतना स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टीचिंग जो है इतना एस्पिरेशनल करियर नहीं है, तो हमें एकदम टॉप ऑफ द पिरामिड टैलेंट तो मिल नहीं रहा होता, हमें बॉटम ऑफ द पिरामिड मिल रहा होता है, उसमें हम वंडर्स करना चाहते हैं, जो कि टिपिकली प्रॉब्लम हो जाती है. एडटेक ने ये नॉलेज प्रोवाइड करना शुरू किया, एंड स्कूल के पास में एक सर्टिफिकेशन का एक हुक रह गया कि जिसके ऊपर वो अभी क्लिंग कर रहा है. बट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, जैसे कि आपने कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी में उसे सोचना होगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप एक नया एवेन्यू खुला है. पहले इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वाज वेरी सिंपल. इट वाज दैट इफ यू आर अ आर्टिस्ट, ब्रिटिश एरा के भी पहले अगर आप आर्टिस्ट होते थे तो आप एंटरप्रेन्योर होते थे. लेकिन अब वो आर्टिस्ट नहीं है, अब एंटरप्रेन्योर चाहिए, वो भी ऐसा चाहिए जो अपना स्वाभिमान बनाए रख सके और आत्मनिर्भर बन सके, जो कि नई टर्मिनोलॉजी है ऑफ द नेशन एज ऑफ नाउ. क्योंकि एक बात सच है, जितने लोग हैं उतनी नौकरियां नहीं है, और इतनी जल्दी क्रिएट भी नहीं की जा सकती. सो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट इंडिया हैज. So how is this solution going to really come into play when we talk about education, and that also about K-12? So thank you, Chandrasekhar ji, for giving it the school wala perspective to the whole discussion. Let me now invite somebody who brings in a little exposure of higher education in international waters and in Indian waters, and right now is the senior manager at the Office of International Partnerships at Shiv Nadar University. A very warm welcome to Ms. Harshita Tripathi. Harshita ji, over to you for the next 3 minutes on restarting education. Some strategies that you would want to give to the K-12 ones about the new session that they're going to begin. Over to you for the next 3 minutes. A very warm welcome. Hi, hello. Thank you, Daksh. And glad to meet all the co-panelists here. I'll straight away jump to the discussion perspective here. And couple of things after hearing Professor Mani and Chandra especially. And I'll be talking about those very slightly during the conversation while I speak about those. So I'm going to speak majorly focusing from educators' perspective, as you rightly said. I don't have much experience over here in the K-12 sector, but I'll be presenting on the higher education sector and therefore touching more on the international perspectives. If you remember, Daksh, in the previous session when we once met during one of the conversations on Blub World, there was one thing which I spoke about, and that stands true even now, which is collaboration. You know, one thing which pandemic has set us and made us all aware was that competition isn't the key. One has to collaborate, and that's going to be the driving force. Now, the good thing about the collaboration this time, good thing in disguise basically, was that everything and everyone were in this together. It wasn't the Eastern world or the versus the Western world. It wasn't the developed versus underdeveloped countries or nations. It wasn't the rich versus poor. This was a pandemic basically, which engulfed everyone. You know, and that's where collaboration emerged as one of the key factors, and that's something which was very close to us because we work in the international partnerships and those kind of dealings at the university level. But there are a few things for educators in general which I feel, irrespective of at which level you are working at, whether you're at K-12, whether you're at primary, elementary, higher ed, or even at management level, you know, there are a few things which stands true. And after 9 months of being in the lockdown and in the pandemic series of the learning, I think then that these kind of becomes and emerge as very important factors. Okay, so here are these couple of things which I'll be mentioning and talking about. First is a basic question that how do we ensure digital equity? Okay, and online transition has happened, online learning is going on, but
as a matter of fact, we all know that there are so many people deprived of these access. Okay, so as educators, how do we ensure digital equity? That's a basic question which one needs to answer and probably have solutions as we step into 2021. Okay, the second thing and aspect is practice, and I'll speak about what practice basically means. As educators at different level, we all had several challenges. We learned from each other, we learned from the available resources, and now the key to that learning is that keep on practicing. If I have defined or I have looked upon a certain tool which can help my students or which can help my international students learn something or gain something from it, the only way to kind of inculcate and develop that further is that I keep on practicing it to deliver it in the best possible manner. And why that's essential is because what we lack, I'm using the word lack because that's something which is very evident. What we lack in online learning is the emotional connect. There are several reports which have come out that educators aren't able to develop that emotional connect with the students. Okay, and in fact there's one article which I'll kind of leave the link in the chat box, which talks about that learning was probably the least important aspect of 1 year of loss for students. What was major for them was the loss of safe space. What was major for them was the loss of, especially in the rural areas, daily nourishment. What was major for them everywhere else was the experience of childhood. So for them probably the books and the courses came at the last. There were several other important things which they were losing while they were not in the schools. So that emotional connect is very important, and that again can be just gained through practice. You kind of practice how to deliver your content at the best possible manner, and then you kind of gain confidence over there. The other aspect which I think is very important is that in the pandemic, as Chandra also mentioned, and I think Professor Mani also highlighted on this, was that parents became an important stakeholder. While they were already there, that's true, but somehow because students were spending most of the time in their houses, parents emerged as one of the very important powerhouse of children and are being around them, right? So as educators, the next responsibility for us then was setting clear expectations to students and to parents. Let's not overpromise. We are all in this together. We know the challenges. So make sure that as educators, we kind of set the expectations clear. And taking simple examples, there are 12 chapters. Let's be fair and honest enough. We won't be able to get the fill in the blanks, match the following, everything done over there. Ek saath, you'll have to contribute in it. I'll teach the chapter, but make sure that you sit with your child and help them do the other things or the practice papers and other things in details. And that's what we are doing. For example, at my role over here, the kind of interactions we had in physical space, that has kind of diminished. So what we are doing is we're doing all these sessions overall with our prospective students or with our prospective partners, and then obviously we can't deliver everything over here, so we give them the resources that, hey, these are the resources, please go through it, use the links, use the website details, use these reports, and you'll get to know a lot about us. We can't be able to deliver everything over there in this 30 or 40 Zoom meeting minutes. So that's another thing, that set the clear expectations and be honest about it. And the last important factor, which I think all of us, irrespective of the age, the ethnicity, the background, all of us should work on is addressing the emotional toll. The amount of anxiety, the amount of stress, the amount of uncertainty the pandemic or this whole lockdown has left onto us. One needs to be more conscious, one needs to be more empathetic, and that's and probably these two are another key elements which kind of has to be learned and taught in elementary schools itself. So while we talk about critical thinking, problem solving, liberal arts, multidisciplinary learning, one needs to be conscious, one needs to be empathetic, and these are also the skills which are very important and has to be taught at the school level. Along with this, there are a couple of things of how ed systems can transform, and there are several ways to do it. But again, all of these connect to the 5 basic points which I mentioned before, that one has to ensure digital equity, one has to keep practice. There's nothing better than that. We have to set clear expectations, we have to address the emotional toll, and make sure that all of these things are documented.
One of my mentor kept saying that whatever great things or whatever different things rather you're doing in these times, make sure you document it. No one knows when you need to go back to those papers and see what you did, how you did, when you did. Hopefully things don't repeat itself, but these are the learnings and it's best to be documented. So I think these were the 5 points which I had basically about how one can restart education. I'm not sure how innovative they are, but definitely they are useful. That's all, Daksh. Thank you so much, Harshita ji. To summarize what you said, you started with collaboration and not competition. Collaboration actually हम लोगों पे force upon कर दिया गया. कोविड के आते ही सब कोलैबोरेट करने लग गए, उसके पहले सब कॉम्पीट करते थे, तो हम झगड़े से प्यार मोहब्बत पे एकदम से आ गए. सो कुछ लोगों के लिए डाइजेस्टेबल था, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए डाइजेस्टेबल था, कुछ के लिए नहीं था. जिनके लिए नहीं था वो इंडस्ट्रीज अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जिनके लिए था वो अभी फ्लरिश कर रही हैं. सो दैट्स द वे द कंप्लीट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 4.0 जिसको आप कह रहे हैं दुनिया में, वो एक्चुअली कोलैबोरेशन की तरफ फोकस कर रहा है, अपने कोर एरियाज की तरफ फोकस कर रहा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जिस पर हर्षिता जी ने भी बात करी कि पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल हो गए. एक्चुअली पेरेंट्स क्रिटिकल थे, बट उन्होंने एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया था. अब फाइनली वो वापस जग गए कि नहीं, ये प्रोसेस पूरा बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा घर में भी रहेगा. एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू टीच देयर किड्स इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, क्योंकि अभी उन्हें नई नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे दिन भर घर पर हैं. So this is changing education the most, and school as a model has become completely transparent. हर क्लास में कोई ना कोई पेरेंट बैठा होता है, कोई ना कोई आपको जज कर रहा होता है. सो ऐसे में स्कूल के लिए या K-12 ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बड़ा टिपिकल हो गया या थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है. Then you talked about lack of emotions when we go online. Emotional dearth हो गई है, ये बात हकीकत है. Then loss of safe space एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि बच्चे आपस में जब मिल लेते थे तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इमोशंस एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे जो वो घर पे नहीं कर सकते. और वो जो लॉस है उसे पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस ये भी था कि जब ये बच्चे मिलते थे तो ये आपस में दुनिया जहान के वायरसेस भी एक्सचेंज करते थे और उसी से इनकी इम्यूनिटी बनती थी. तो ये वो एक साल की जो इम्यूनिटी ये अपनी बनाते, वो मेजर मिस हो गया इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक में से, क्योंकि आपस में मिलेंगे नहीं तो ये वायरसेस पे एक्सपोज नहीं होंगे, तो वो एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं. ये भी एक चैलेंज है जो नई तरीके से खड़ा हो गया है, that will need to be addressed in the coming times. Resources, research, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई. और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके स्टूडेंट्स के साथ एकदम सच्चा होना बहुत क्रिटिकल हो गया कि भाई मैं सब कुछ नहीं कर दूंगा इस 30 मिनट में, बहुत कुछ है जो आपको भी करना होगा अपने एंड पे. सो थैंक यू सो मच हर्षिता जी. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर, चंद्रा जी सेड अ वेरी अमेजिंग पॉइंट जो मैं मिस कर गया, मैं वापस यहाँ पे बोलना चाहूंगा. ही टॉक्ड अबाउट चाइल्ड सेफ्टी. हम लोगों ने अभी तक करीबन 111 ऐसे टॉक्स किए हैं, 1500 से ज्यादा लोगों से बातचीत की है. एंड वन थिंग जो सबकी प्रायोरिटी है लेकिन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिस पे कोई डिस्कशन नहीं है, इज लेजिस्लेशन. इंडिया अभी भी कोई चाइल्ड ऑनलाइन यूजर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है हमारे देश में. यूएस का एक कोपा कानून है जो इंडिया में लागू भी नहीं होता, जो यहाँ की आईटी फर्म्स थोड़ा बहुत फॉलो कर रही होती हैं. वी एक्चुअली नीड अ रियल लेजिस्लेशन टू कम इन टू प्लेस, बिकॉज इतना सारा इंटरनेट बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और वो इनडाइजेशन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एज अ कंट्री. So this is something that we need to look on, because यहाँ पे legislation की बहुत ज्यादा बड़ी आवश्यकता है. एंड यहाँ पे एजुकेटर्स को दुनिया भर से रादर आपको एक काउंटर ओपिनियन जिसे कहते हैं वो बनाना शुरू करना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ लेजिस्लेशन, मनी इज व्हाट ड्राइव्स इट. तो वो फैक्टर को चेंज करना या वहां भी माइंडसेट चेंज करना शायद एजुकेशन कम्युनिटी के कंधों पर ही है, और शायद आप ही लोग या हम लोगों के कंधों पर है. वेयर वी ट्राई टू बिल्ड एन ओपिनियन दैट अगर इंडिया जैसी कंट्री में हमें ऑनलाइन प्रोटेक्शन चाहिए तो वो किस तरह के लेजिस्लेशन से हो, किस तरह की प्रैक्टिसेस से हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं, होना बाकी नहीं है. So now it's already late, but ये है कि हाँ इस पे there should be some work done. So let me now invite the next speaker for today who will add in the entrepreneurship वाला तड़का, जो अभी पूरे देश का मेजर बातचीत का कॉन्टेक्स्ट हो रखा है. शायद हम चाय की चर्चा से लेकर के चाय की दुकानों, पकौड़ों, एंटरप्रेन्योरशिप और आत्मनिर्भरता तक पहुंच गए. ये पूरा एक लीनियज जो है मीडिया ने जिया, आपको भी जिवाया और आपकी जिंदगियों का पार्ट बना दिया. So अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या हमारे लिए एज अ कंट्री अच्छी है, क्या हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल अच्छी है? क्योंकि चाणक्य ने एक बड़ी आसान सी बात कही थी कि अगर एक इंडिविजुअल मरता है गांव के इंटरेस्ट में तो गांव को बचा लीजिए. अगर एक स्टेट जिंदा रखने के लिए एक शहर को मारना पड़ता है तो शहर को मार दीजिए, और अगर एक देश को जिंदा रखने के लिए एक स्टेट को मारना पड़ता है तो एक स्टेट को मार दीजिए. सो वी नीड टू थिंक कि कैन वी गो ऑन दीज लाइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप शायद इसी पर चलती है, कीपिंग द मास ऑब्जेक्टिव अबव
the individual objective. But हाँ, इनोवेशन भी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट, ताकि मैं आपसे कुछ नए तरीके कंटेंट सुन सकूं और यहाँ पे हमारे लोग भी कुछ नया सुन सकें. So let me invite the next speaker for today, Mr. Pavan Elena, who's the founder of Metamorphosis School of Entrepreneurship. Over to you, Pavanji, for the next 3 minutes. Please unmute your audio, and a very warm welcome. Hi everyone, very good morning. Hi Daksh, thank you for having me here. And so I'm Pavan. I run a company called Metamorphosis, where we introduce entrepreneurship for school kids. So right from grade 6th and above, we introduce entrepreneurship, and currently there are about 1 lakh students into our platform. Actually, Professor Mani and Chandra sir both have given a very good insights on, how do we restart the education, and Chandra has given a very good insights on, how technology can't replace, the humans as well. So that is one of the points that even I would like to touch upon here. Even though we are talking about entrepreneurship, talking about entrepreneurial skills, why they are really important right from the school level, I would like to talk about 2 points here, how this entire pandemic or entire, COVID scenario has changed the way we started teaching entrepreneurship. Earlier, we were completely an offline company where we used to send tutors, we used to send entrepreneurs to the schools, right? But the kind of, the digital transformation that has happened across the entire education industry, now we are able to connect entrepreneurs from US to the kids. We are able to connect entrepreneurs from Europe to the kids. And the kind of knowledge exchange that is happening is kind of, immense. I mean, the kind of interactions that are happening, the kind of transactions that are happening is amazingly, it shaped up really good. And the second point that I wanted to talk is, like everyone was asking, or like everyone was giving their views here, can technology or this digital transformation can replace the teachers? Right? I just asked one question to one of the parents, that is, did calculators replace, mathematics teachers? No, right? I mean, still there should be an offline touch. And what students are actually expecting is a guru or a mentor, not a simple, not a teacher, right? So these are the 2 points that, that we have seen. And the kind of cultural shift that has happened in the last 8 months was amazing, because the kind of time that each child has got to spend with their parents is amazing. Especially with the field that we are in, we talk about entrepreneurship, we talk about ideas, we talk about innovation. Earlier, the kind of brainstorming that used to happen with their parents was less. But now, because of pandemic, because of the time that everyone is getting, now the kind of problems that they're talking about, the kind of problems that they're identifying is amazing. The students are talking about AR, VR. Now, pandemic has given more problems to solve. Now, the students have formed their own communities. They are talking about how do they solve these global problems. The students are coming up with their own handmade masks. So this COVID has, is kind of a blessing in the disguise in this entire entrepreneurial and also this education industry. So these are my insights. And anyways, moving forward, I would like to discuss, depending on the topic that you have, I would like to share my insights. Thank you. Thank you so much, Pavan ji. आपने बात अपनी शुरू करी कि बहुत एक मेजर नॉलेज एक्सचेंज हो पा रहा है, क्योंकि दुनिया डिजिटली कनेक्ट हो गई. डिजिटली कनेक्टेड पहले भी थी, लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज हो गया. हम लोग एग्री करने लग गए बातचीत ऐसे करने के लिए. मुझे याद है, अभी भी आज से करीबन शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरे पास जिंदगी का पहला जूम इनवाइट आया था, और मुझे ये नहीं पता था कि इसको ज्वाइन कैसे करते हैं. और आज की तारीख में ये है कि शायद पूरा ऑफिस सभी कुछ इसी पे चल रहा है और कोई अपना घर नहीं छोड़ रहा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड. एंड उसके साथ में, जैसा कि आपने कहा, टीचर को मेंटर बनना पड़ गया. फैमिली टाइम लोगों का बहुत बड़ा, बच्चों का घर से कनेक्शन थोड़ा और बेटर हो गया, थोड़ा और स्ट्रांग हो गया. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ, क्योंकि बहुत नई नई प्रॉब्लम्स आ गई. और एंटरप्रेन्योरशिप का तो बेस ही यही है कि अगर आप जितने बेटर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका जितना अच्छा सोल्यूशन देंगे, दैट्स वेयर यू रियली फाइंड दैट बिजनेस. वो छोटा सा गैप जो आपको ढूंढना होता है. So thank you so much, Pavan ji. Let me now invite the next speaker for today, Ms. Pragati Sharma, who's the founder and CEO of Edmonger Consulting. Pragati ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio, and a very warm welcome. Thank you, Daksh, for inviting me for such a lovely event. And I'm so happy and glad to be connected with everyone here today. This topic is actually the need of the hour to discuss and know about things, because we are going to enter in 2021 and a new session will begin from March. And since I am from a sector of K-12 and I've been associated to school and closely working with their consultancy and what exactly, as a advisor, what I can advise schools. So I'm going to set my context here with 2 major points. One is
how are we going to deal with our administration and school stakeholders? And the second is, how are we going to deal with the logistics, because there are so many things which are going to come, and since NEP has come and COVID has come, now we have got two challenges, two things to tackle this year. So it will not be an easy year for the school stakeholders, because suddenly we have two new things coming up. One, we have to revolutionize education with respect to NEP, and second, we already have to take precaution and revamp education and entire school system according to post pandemic. Though we will get medication and vaccination and things are there, but we have to still take care of the health. We have to keep health as a perspective in our head, as a priority, I would say. We have to change everything from physical setting to mental setting to I would say that whether the internet is available, because I have been associated to schools where internet is not available in the schools for full time, because you need a larger bandwidth, you need this, that. So they have most of the work like post school, you have to do this. I've been associated to the schools where Wi-Fi is available for full time, so they can work in the school. So there are so many challenges, so many settings which we have to now see, and we have to come up with an SOP now, a proper guideline and a proper structure. We have to, I mean, the leaders, it's a difficult time for the leaders to deal with these things. Not just the leaders, because they will be in the planning committee, but the people who are going to execute. And since my fellow panelists have already covered the point of social anxiety, how counselors play a bigger role, how mental health will be on toll, how other things will be, they have to rethink about everything. Earlier, only we used to have in school, we used to have a small medical room or thing like this, but now a small medical room will not work. If in case a child is falling sick, what are you going to do with that? So there has to be a lot of strategies. What will be the SOP if the child is missing because of some or the other reason? If the child is falling sick, what are you going to do? If says a child is going to miss the school for 1 month, so are we going to let the child miss that 1 month this year? And when I talk about NEP, new teaching strategies, instructional designs have to be followed this year, so that everybody at least feel mentally relaxed, because we already had a bad year 2020, I would call. Not as in like, yes, we have learned a lot in this 2020, and it has definitely revamped and revolutionized school education, but I will still call it like we had a tough time in 2020. Now again, if we in 2021, if we will have tough time, then I think the education system will definitely feel that, okay, what are we doing? Are we lost somewhere? And they will be, it'll be like a pressure to people. Nobody would want to come to education industry. Already there is a less aspirant, as you have mentioned in the beginning, for education industry. So this is my point. Thank you so much, Pragati ji. आपने थोड़ा ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव ऐड किया पूरे डिस्कशन में कि जब ये स्कूल्स खुलेंगे तब इन्फर्मरी से काम नहीं चलेगा. आप स्कूल के अंदर पूरा एक क्लिनिक चाहिएगा आपको. अगर बच्चा गलती से भी बीमार पड़ गया तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे? पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या करेंगे, कि आप उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे, वैक्सीन सबको होगी नहीं होगी, एंड सारे प्रिकॉशंस हम तो रख लें, लेकिन जब हम टॉडलर्स को स्कूल बुलाएंगे तब क्या होगा? क्योंकि वो तो कोई प्रिकॉशन रखेंगे नहीं. सो यस, द ऑपरेशंस पार्ट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दीस डिस्कशंस, कि जब ये स्कूल्स वापस से रिज्यूम हो रहे हैं धीरे धीरे, ये वापस से सब चीजें नॉर्मलाइज पूरी तरीके से कब तक होंगी. सो आज के डिस्कशन में जो अभी तक की बातें आई उसके अंदर से आई वुड वांट टू पुट आउट अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि आज से अगले 1 साल में या 2021 का अगर मैं चाहूं कि आप लोग एक एक लाइन में मुझे एक फोरकास्ट दें, जैसे वो क्रिस्टल गेजिंग होती है, कि ठीक है आपके हिसाब से शिक्षा की भविष्यवाणी क्या है एज एन एक्सपर्ट, कि अगले 1 साल में या 2021 में शिक्षा में क्या क्या होने वाला है. तो क्रिस्टल गेजिंग आप क्या करेंगे और आप क्या कहेंगे कि हाँ ये है जो मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा 2021 में, और इस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम में. सो मैं सबसे पहले जो हमारे आज के स्पीकर थे उनको वापस से इनवाइट करता हूं, बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन ऑन द प्लेटफॉर्म, कि उनसे लेट्स हैव अ भविष्यवाणी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अ फोरकास्ट फॉर 2021 की एजुकेशन में क्या होने वाला है. ओवर टू प्रोफेसर RSS मानी. थैंक यू दक्ष, आपने हमको ज्योतिषी भी बना दिया है, तो हम कोशिश करते हैं. माय थॉट प्रोसेस इज
the teachers and the faculty of institutions should learn at a speed faster than the students. I think this is going to be the clinching factor of whether a faculty in the education system can survive and succeed. In all these years, we used to only say that it could be survival of the fittest. Here it is now going to be like corporate culture. You perform or you perish. And the performance here will be the ability to adapt to blended learning delivery systems. And I think अक्सर ये हो जाता है एजुकेशन सिस्टम में, काफी सीनियर सिटीजन्स हैं मेरे जैसे, और उनको चेंज इतनी आसानी से वो नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब तो ये चॉइस नहीं है उनके पास. They have to learn faster than the students, and they have to also imbibe it and transfer it to the students. So this blended learning approach is going to be the most visible change I visualize in education in 2021. प्रोफेसर RSS मनी ने एक नया चैलेंज दे दिया सारे टीचर्स के लिए कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा तेजी से सीख जाएं, जो कि ऐसा चैलेंज है जो एजुकेशन में हमेशा से था, या उसको पैराडॉक्स कह सकते हैं आप, कि हमसे पिछली जनरेशन जो उससे पिछली जनरेशन से पढ़ी होती है वो हमें पढ़ाने आती है. तो ऑलरेडी 2 जनरेशन का गैप हम बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं. तो ऐसे में टीचर अपनी लर्निंग का पेस बढ़ाए कैसे या क्या करे? लेट्स आस्क द एडुप्रेन्योर हु इज हियर. चंद्रा जी, ओवर टू यू कि आपकी क्रिस्टल गेजिंग क्या कहती है? I would start with a disclaimer. It is very easy to say anything right now, but for all you know, nothing may come true, right? Because we know that what 2020 has done. Now, let me talk from the facts, what we know. See, Kerala, Karnataka, and Assam started the schools welcoming the students back to classes from 1st of January 2021. And since we have presence in Karnataka, almost every district, what we are seeing is not about children coming back the way we expected. It was not a floodgate that, okay, you open and then children are waiting outside the door and they're entering. Let me tell you, we are just 2 days into this session from Jan. We have hardly have 15 to 20% attendance. Children are still not comfortable. Parents are still not comfortable. And when I'm talking about 9, 10, 11, 12. And what I am saying, although it is too premature, but I will say that this year, the trend of students coming in physical form is not going to reach beyond 50 to 60%, because it takes time for people to get comfortable. Now, why am I bringing this? Is it proposes 2 challenges, and that is my prediction. Number 1, you need to identify mechanisms to make the transition smooth. And there you need to unlearn a lot of things about syllabus completion, setting rules and regulations in the campus, and making them follow a routine. These things will not happen immediately the way it used to happen. पहला क्या होता था, when you open the campus on June 1st after summer vacation, everybody knows what they have to do. They'll stand in line for morning assembly, they will know where they have to go to class, and everything used to happen. But now things are not, because both teachers, staff members, and students, all the people are confused in the campus. In fact, कुछ ऐसा हुआ कि when teachers and students came on 1st of January, they didn't know what to do. They don't want to assemble together because social distancing is the norm, but at the same time, they don't know whether they should go to the ground or whether they should go to their classrooms or they should go to the staff room. They are very scared. So we need to be more communicative in nature. मतलब you need to, I mean, I'll tell you in terms of crisis, जितना ज़्यादा हम communicate करेंगे उतना अच्छा है. So we have to keep communicating, written, oral, or gestures, and tell them. So my first prediction is confusion is going to be there, and we have to learn to live with confusion along with vaccine. Vaccine may be there, but confusion also will be there. The second prediction is there is still some amount of people, students and staff or parents, who are not comfortable coming to these classes, to the schools. You cannot let them go. You cannot focus only on them. So this year, if last year was all about digital, this year is both physical and digital. So we need to move transitionary that way. And I'm saying this is going to be the trend till the end of this calendar year, at least till December. That's what I would predict. Thank you so much, Chandrasekhar ji.
एंड आपने एक अभी एकदम करंट रियलिटी जो आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपने बताई, जो कि काफी जनों की इमेजिनेशन के बाहर होगी, क्योंकि सब जने यही सोच रहे होंगे जिस दिन वो इंस्टीट्यूशन खुला वो फ्लड गेट ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15% की अटेंडेंस स्कूल में आना और वो मैक्सिमम 50% तक जाना स्कूल एज अ स्ट्रक्चर को चलाना ही इम्पॉसिबल कर देती है। एंड उन नंबर्स के साथ में रिजल्ट्स लेके आ पाना, वो एक चेरी ऑन द केक है जो कि अचीव करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपने एक जो फोरकास्ट किया कि कंफ्यूजन एग्जिस्ट करेगा और कम्युनिकेशन उसका इकलौता सोल्यूशन है, तो इन दोनों पे कंटिन्यूस काम करते रहें, क्योंकि ना ये जाने वाला है और अगर ये चला गया तो ये बहुत बढ़ जाएगा। सो ये दोनों का बैलेंस, कंफ्यूजन एंड कम्युनिकेशन को बैलेंस आउट बना के रखें, तो शायद आपका स्कूल नॉर्मली ऑपरेट कर पाए। सो थैंक यू सो मच। लेट मी नाउ इनवाइट समबडी हु एड्स द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगेन। आपका फोरकास्ट क्या कहता है हर्षा जी? Over to you for the next 2 minutes. What do you see is going to happen in the K-12 space? Aapki crystal gazing. Yeah, so I completely agree. See, it's going to be a blended or hybrid form of learning, whatever you would like to call it. In fact, if we learn from the international experiences, basically what other countries are doing or what other schools in K-12 are doing, most of the schools in Gulf region or Middle East region, they started this whole hybrid learning from October onwards. So it was 50% students who were coming to classes, say in Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, in all these areas, and there were 50% who were at home, and the classes and the teachings were happening live from the classes. So the teachers were all coming to school. It was only with the students that they were doing this 50% thing. All right. And similar thing is going to be practiced in higher ed. But the only difference is that in the higher ed space, what they are suggesting is that, all right, let's get the research scholars first. That's something which even we at Shivnada University are doing. Let's get the master student first. And then from the 4-year undergraduate degree or the 3-year undergraduate degree, whatever you have in your university, depending on that, you get the final year students first. So Chandra is absolutely right. No one is actually asking, or rather parents are also not sending the kids in full go that, okay, now you go to schools, all right. And the second thing is that even institutions don't want to kind of take that, while we are all responsible, but you don't want to take that accountability, that in the fact that, see, if something happens, I'm responsible. No one is going to say that, and no one's going to take that accountability, right? Because it's very different, it's very uncertain. No matter how much precautions you take, anything can happen. It's a virus which is clearly invisible, bro. So the prediction simply is that it's going to be the hybrid form of learning, but the challenge is that there's going to be more confusion, and I'll tell you why it's going to be more confusion. Because there's a transition. Last year it was all very clear कि सब online होगा. अभी एक confusion जो आ रही है, it's happening because of the transition कि आधा ऑनलाइन होगा, आधा स्कूल आना है, नहीं आना है, क्या जो स्कूल में जा रहे हैं उनको मार्क्स ज्यादा मिल जा रहे हैं, आर दे गेटिंग मोर अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स, आर दे गेटिंग मोर मार्क्स इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स, सो दोस कंफ्यूजन्स आर हैपनिंग. सो जो पेयर प्रेशर है वो ज्यादा हो जा रहा है अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द फैकल्टीज, एंड फॉर दैट मैटर इवन अमंग द स्टाफ. द मोमेंट यू हियर दैट सो एंड सो स्टाफ वेंट टू कॉलेज, यू आर लाइक, मेरे को भी जाना चाहिए क्या? So those things come in your mind, and then you are under pressure. It's not mandated by the institution, it's a peer pressure which builds up, and that leads to confusion. Similarly, if you look at the guidelines from the government, four times within a year it's going to be the exams, the competitive exams. The admission cycles have moved on. The CBSEs are going to conduct exam late. So the question is, what exactly have we learned from the last year? Last year you weren't aware, तो आपके एग्जाम्स डिले हुए. दिस ईयर यू वर अवेयर, बट बिकॉज द लर्निंग हैज स्लोड डाउन, नो वन इज एक्चुअली एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं हुए सीबीएसई, आईसीएसई एंड बोर्ड्स एग्जाम्स में. वी डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट, वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट, एंड देन वी डोंट नो व्हेन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन. So there's this transition from K-12 to higher education, which is in confusion. There's a transition from online to blended learning, and that's creating confusion. So this is a challenge. But the good thing is that from last year, what we have learned is resilience. Each one of us now are little better in dealing with uncertainty than what we were before 2020. So I'm being optimistic bit there that whatever happens, if 2021 is saner and better,
great. If not, then we'll cope up. थैंक यू सो मच हर्षिता जी. आपने बात अपनी शुरू करी फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हमारे साथ वाले तो जा रहे हैं, अब हम क्या करें, नंबर ज्यादा तो नहीं मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा. सो वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. एंड दूसरा जो K-12 से हायर एजुकेशन का जो ट्रांजिशन है वो तो वी वुड से डिसरप्ट ही हो गया है, बिकॉज कोई कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहा. नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि होगा क्या. CBSE अगर मई में एग्जाम्स लेगा, उसके बाद में वो रिजल्ट्स देगा, तो हम करें सेशन कब चालू करेंगे, कब खत्म करेंगे. और ये साइकिल ग्लोबली तो चेंज होगा नहीं. महीने वही रहेंगे जिसमें एडमिशंस होने, सारी चीजें वही रहने वाली, लेकिन आप पूरा साल कुछ महीनों में श्रिंक कैसे करेंगे. एंड यस, ये कंफ्यूजन अगले पूरे साल भर रहे या उससे पहले खत्म हो जाए, उसकी सब उम्मीद कर रहे हैं. लेकिन 2021 2020 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि 2020 में तो हमें पता था ही घर में रहना है, अब हमें पता नहीं है घर में रहना है कि बाहर रहना है. सो थैंक यू सो मच हर्षिता जी. एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी वैसे भी बहुत सारे कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी से भरी हुई होती है. तो पवन जी, व्हाट इज योर टेक ऑन कि K-12 में जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप आपसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बच्चे किस तरीके से इसको एज अ करियर विजुअलाइज करेंगे. और जैसा कि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा आत्मनिर्भर हो गए 2020 में, क्या ये बच्चे आगे आत्मनिर्भर एंटरप्राइजेस खड़ी करेंगे, या दे विल स्टिल बी लुकिंग एट जॉब्स. क्योंकि इतने बच्चों से आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत माइंडसेट आप भी जानते होंगे उनका. तो ओवर टू पवन जी. Yes, I think my prediction, especially in this entrepreneurial space, is first thing is I think there will be a very good community that is going to be built, right? I mean, the community of Gen Z entrepreneurs or Gen Z, the next generation entrepreneurs, is already being built because the students are already taking part in a lot of events that are there online, right? I mean, now nothing is stopping them. So the students are participating in coding competitions, they're participating in hackathons, they're participating in so many other events, and they've been networking with each other. So that community is going to be built in this 2021, and a lot of ideas are also going to come into action. Now nothing is going to stop them. They have got enough support from their family, they have got enough support from their schools. Now they need not travel. I mean, given the scenario, I don't think they'll have to go to the school for at least 3-4 months from now. Even if at all they're going in the hybrid model, they'll have a lot of time for these extracurricular activities, right? I mean, going online and learning anything. They'll just sign up with masterclass. They're learning how to do hydroponics. So these kind of the additional learnings are going to come. When they are doing additional learning, they feel like forming a community. They feel like exchanging their ideas with others. So I think 2021 is the time to build this Gen Z community, or the next generation entrepreneurs are going to come together. And 2022, 2023 onwards, you just give a problem. In fact, if there is any other pandemic that is coming up, the solutions will be coming from these Gen Z entrepreneurs very soon. So this is something that is going to happen in the future coming years. Thank you so much, Pavan ji. जैसा आपने कहा कि एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाएगी चालू, कोलैबोरेशन ऑलरेडी चालू हो गया है, बच्चे उस कम्युनिटी का पार्ट बनना, उस कम्युनिटी से अपना भी फायदा लेना, उस कम्युनिटी को फायदा देना, जो फाइनली हम लोग मतलब व्हाट वी कॉल एज कल्चर, वो शायद अब वापस आ जाएगा कि हम एक दूसरे से बात करेंगे. वील स्टार्ट टू बिल्ड एंड बी इन ग्रुप्स, क्योंकि अभी तक जो पूरा सिविलाइजेशन था वो ग्रुप से आइसोलेशन की तरफ जा रहा था, छोटी फैमिलीज, हमारा अलोन टाइम. अब फाइनली लोगों को अलोन टाइम इतना मिल गया है कि अब उन्हें कम्युनिटी चाहिए. तो ऐसे में ये कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, और शायद कम्युनिटी को बेनिफिट देना और उससे लेना अपने आप में एक आर्ट है. वो अगर हम सीख जाएंगे तो एज अ सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. प्रगति जी, व्हाट्स योर क्रिस्टल गेजिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट तो नहीं कह सकते, फॉर दिस ईयर, 2021 चालू हो गया है. सो टू प्रगति जी. I think most of the points have been covered by my fellow panelists, and but I want to just add a little what I personally feel for this. Yes, confusion will be there, but I'm little positive about it. When we will be very much confused, we'll be very much together, and then there will be an acceptance after that. A confusion will be there, and then there will be an acceptance. Okay, this will happen. Now we have this problem. Now we have to tackle these things. So there will be an acceptance, and then there will be a mindset shift, I would say. There will be a mindset shift, and then we will be empowered. This might take the entire year, but yes, like in 2020, initially we were all lost, but by end of the year we knew that okay, we have to accept the technology. Now in 2021 we will accept things the way they are, and we will rise up with something strong, I would say.
And the second point which I want to say, there will be a continuous professional need of continuous professional development in all these sectors, I would say. And I'm very much with Pawan that this year 2021 will be the year for all the entrepreneurs. There'll be a lot of things which will come and which will definitely empower our country, and we will, the things which we have been dreaming from past 10 years but were only in planning or must be in a process, but this year has forced us to switch to technology immediately. Next year, not next year, obviously this year 2021 will force us again to accept it quickly, as quickly as possible, and strengthen and empower us. So this is what I feel. Thank you so much, Pragati ji. जो चीज हमें मारती नहीं वो हमें ताकतवर बनाती है. That's the way it is. Anti-fragile जो concept है कि आप चीजों से जिनसे हारते नहीं हैं उनसे आप और ज्यादा strong होते जाते हैं. इस पूरे साल में Blub World comes from a very simple concept that we find stories among teenagers to inspire other teens. हम साल भर दुनिया भर में ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो कि कुछ बहुत गजब कर रहे हैं और उन बच्चों की स्टोरीज दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं. क्योंकि पढ़ाने के तरीके में अब जो सबसे आसान तरीका है इस आप ऐसा स्टिमुलस दें कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे, और सबसे अच्छा स्टिमुलस इज मोटिवेशन या इंस्पिरेशन. दैट्स वेयर वी फाइंड आवर नीश ऑफ वर्किंग. तो हमने आप सबसे काफी कुछ जाना समझा, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं एट ब्लब वर्ल्ड कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से ज्यादा ज्ञानी होते हैं एंड उनका ज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए. तो इसलिए आज हमारे साथ दो ऐसे टीनेजर्स हैं, दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के से आते हैं. दोनों टीन पोएट्स हैं, दोनों अच्छा लिखते हैं. ये दोनों अपनी छोटी छोटी कविता आपको सुनाएंगे एंड उसके बाद मैं आपको छोटी सी एक टीनेजर की स्टोरी सुनाऊंगा, सो दैट व्हेन दिस डिस्कशन कम्स टू एन एंड हम फाइनली कहीं एक वो पर्सपेक्टिव ला सकें पूरे डिस्कशन में कि हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं. बिकॉज हम एजुकेशन का सबसे बड़ा गैप या सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम बच्चों को समझते ही नहीं. हम अपने आप को समझते हैं, हमारी गलतियों को बच्चों में सुधारने की कोशिश करते हैं, और वो शायद एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को बीट कर देता है. सो लेट मी नाउ इनवाइट one teen poet who will share his creation. He comes from a very amazing city जो हमारे प्रधानमंत्री जी की constituency भी है, उसके पास ही में वो शहर है मुगल सराय बनारस उत्तर प्रदेश से. He comes from Sunbeam School and his name is Adnan. So Adnan, the next 2 minutes are yours. We are ready to listen to your poetry जो आपने लिखी है. Hi Adnan, welcome to the Blub World's Global Education Meets first session. So Adnan comes from Sunbeam School from Mughal Sarai, Uttar Pradesh. And Adnan ने Blub World का एक Teenage Tunes competition जीता था. उस समय एक poem सुनाई थी. वो poem आज सबके लिए Adnan अब सुनाएंगे. Adnan, over to you. Please unmute your audio. I am Adnan and I am from Sunbeam School, Mughal Sarai. I am a student of class 11th right now from Humanities stream. And today I'm here to recite the poem, The White Swans. So here I go. Where are those white swans who sing and die, bereft of any guilt, without any sigh? Now, simply dogs are here to stare and bark, either offered bone or simply afraid of dark. Magnanimous hearts breeding under quilts, villains are roaming in alleys ready to jilt. We have not been waiting for this to happen, never imagined our ethics turning into weapons. Silently watching a bloodless war and painful cries, can we not in brotherhood arise? The world by an unknown discord is tattered, lives are vain and dreams are shattered. Will this be our strife and this be our gain? How can the world prosper with all this pain? Can't we live holding each other's hand, seeing our brothers smiling grand? How will this turbulence come to an end until we ourselves together stand? Let us now live in peace, hope, and contentment. Let communication be our commitment. Let the slogan of the world be generosity, and sure, this will bring prosperity. And once this is achieved, we will not sing and cry.
Where are those white swans who sing and die, bereft of any guilt, without any sigh? Thank you. Thank you so much, Adnan. It was an amazing poetry. ब्लब वर्ल्ड ने एक चीज जो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से सीखी, जो हम बहुत बार शेयर भी कर रहे होते हैं, कि जब आप बच्चों से आर्ट क्रिएट करवाते हैं किसी भी तरीके का, भले ही वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, ड्रॉ करने में हो, दैट इज व्हेन यू रियली गेट टू द कोर ऑफ दैट चाइल्ड. क्योंकि वो बच्चा क्या सोच रहा है वो शायद आपको बोल के नहीं बता पाएगा, लेकिन अपनी उस आर्ट फॉर्म में आपको जरूर बोल देगा. सो थैंक यू सो मच अदनान, थोड़ा सा आपने हमें ज्यादा जेनरस बना ही दिया आज. थैंक यू सो मच. लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट winner of Love World Teenage Tunes, जिन्होंने अगेन एक पोएम सुनाई थी. She comes from the other part of India, Arpita Jangir. She's an 11th class student from Ambuja Vidyapeeth. She comes from Baloda Bazaar, Chhattisgarh, and वो एक हिंदी में हमें एक अगली कविता सुनाएंगी. So Arpita, very warm welcome. Over to you for the next 2 minutes. Please unmute your audio. आज मैं अर्पिता जांगिड़ अंबुजा विद्यापीठ प्रवान छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के समक्ष स्वयं के शब्दों से व्यक्त की गई हस्तलिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. मेरी कविता का शीर्षक है नाकाम से कामयाबी का ताज. लेकर मन में साहस ऐसा चलो आगे हम बढ़ जाते हैं. लेकर मन में साहस ऐसा चलो आगे हम बढ़ जाते हैं. चट्टानों वाले रास्तों में भी हंसकर राह बनाते हैं. चट्टानों वाले रास्तों में भी हंसकर राह बनाते हैं. कोई क्या कहेगा कि डर को भूलकर आई कैन डू इट की मंजिल बनाते हैं. कोई क्या कहेगा कि डर को भूलकर आई कैन डू इट की मंजिल बनाते हैं. दुनिया की नजरों में नाकाम सही खुद की नजरों में कामयाब बन जाते हैं. दुनिया की नजरों में नाकाम सही खुद की नजरों में कामयाब बन जाते हैं. कौन कहता है नाकाम कभी कामयाब नहीं होता, जरा सोच कर तो देखो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल से कम नहीं होता. कौन कहता है नाकाम कभी कामयाब नहीं होता, जरा सोच कर तो देखो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल से कम नहीं होता. मन में हो विश्वास तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है. मेहनत तो कर कर देखो जरा, नाकाम भी कामयाब बन जाता है. कौन कहता है नाकाम कभी कामयाब नहीं होता, मेहनत तो कर कर देखो जरा, नाकाम भी कामयाब बन जाता है. वक्त ही तो है जो हर पल कुछ नया सिखा जाता है. वक्त ही तो है जो हर पल कुछ नया सिखा जाता है. वक्त की कीमत तो मुझको अखबार ही बताता है. वक्त की कीमत तो मुझको अखबार ही बताता है. जो सुबह 15 रुपए का होता है वही शाम को 15 रुपए किलो बिक जाता है. जो सुबह 15 रुपए का होता है वही शाम को 15 रुपए किलो बिक जाता है. आखिर यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त तो सबका आ जाता है. आखिर यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त तो सबका आ जाता है. गरीबी में बीते परिश्रम के दिन कोहिनूर सा मुकाम पा जाते हैं. गरीबी में बीते परिश्रम के दिन कोहिनूर सा मुकाम पा जाते हैं. ऊंची हमारी मंजिल हो तो अमीरी के सर भी झुक जाते हैं. ऊंची हमारी मंजिल हो तो अमीरी के सर भी झुक जाते हैं. परिंदों की मंजिल उनके पर चमका जाते हैं और वक्त की खामोशी को हुनर बोल जाते हैं. परिंदों की मंजिल उनके पर चमका जाते हैं और वक्त की खामोशी को हुनर बोल जाते हैं. आखिर सच्चे दिल से की गई मेहनत मुकम्मल हो जाती है और नाकाम से कामयाबी सर पर ताज हो जाती है. आखिर सच्चे दिल से की गई मेहनत मुकम्मल हो जाती है और नाकाम से कामयाबी सर पर ताज हो जाती है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच अर्पिता. सो आज के इस सेशन में जो पिछले 1 घंटे में हमने आप लोगों से जाना, आपकी क्रिस्टल गेजिंग जानी, some of the best ideas as till now have been showcased in different white papers of Love World, जो करीबन दुनिया के 6,500 स्कूल्स में हर महीने जाते हैं और उनमें से काफी सारे आइडिया स्कूल्स अपने इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट करते हैं. ऐसे कुछ करीबन 150 से 200 आइडियाज हैं जो अभी हम लोग भी स्कूल्स के साथ ट्रैक कर रहे हैं कि वो स्केलेबल हैं कि नहीं, फिजिबल हैं कि नहीं. उसमें से एक बड़ा अच्छा सा आइडिया, एक स्प्रिंगडेल एकेडमी आसाम एक स्कूल है, वहाँ का एक लीडिंग स्कूल है, जिन्होंने एक आइडिया दिया था जो अपने बच्चों के साथ उन्होंने इंप्लीमेंट किया पूरे इस लॉकडाउन के अंदर, जो अभी भी कर रहे हैं. एंड दे कॉल दैट एक्टिविटी द बैलेंस शीट ऑफ टाइम. कि बच्चों को टाइम को करेंसी की जैसे कंसिडर करवा के उसे एक बैलेंस शीट भरनी होती है रोजाना, कि इस टाइम में से कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना कैश इन हैंड है, कितना एक्सपेंडिचर था, कितना एक्सपेंस है, कितना पेटी कैश था, ताकि आप टाइम को सलीके से इस्तेमाल कर पाएं. वन सच एक्टिविटी वाज डन बाय वन ऑफ द स्कूल्स इन सुंदरबंज इन उड़ीसा. उन्होंने विजडम डायरी बनवाई बच्चों की, कि रोजाना शाम को लिखिए कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया या क्या खराब किया, और इसको हर महीने के एंड में वे कीजिए कि आप अच्छे ज्यादा थे या खराब ज्यादा थे.
सो बहुत इनोवेटिव चीजें स्कूल्स ने करी और ऐसे आइडियाज हमने बहुत सारे स्कूलों से शेयर किए। ब्लब वर्ल्ड का सिंपल इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने का जो आइडिया या कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आइडियाज जो है वो किसी की मिल्कियत नहीं होते, वो किसी की बपौती नहीं होते, तो उसका एक्सचेंज बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक और बहुत ज्यादा फ्री होना चाहिए। तो हमने इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक आइडिया रिपोजिटरी बनाने की कोशिश की और उसी का एक्सटेंशन है ग्लोबल एजुकेशन मीट, जिसमें अगले 7 दिनों में हम ऐसे और बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे करेंगे अलग अलग लोगों से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के, एंड वील पब्लिश देम इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्लब वर्ल्ड। आप सभी ने आज इतना सारा समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर दिस टॉक कम्स टू एन एंड, आप लोगों से हम लोग वापस से अनुरोध करेंगे, जितने भी ऑडियंस में भी लोग हैं और जितने पैनल में भी लोग हैं, 10 जनवरी को ग्लोबल एजुकेशन मीट का लास्ट सेशन है जो सुबह 9 बजे शुरू होगा। उसके अंदर सुबह 9 बजे हम लोगों के साथ होंगे प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, AICTE के चेयरमैन। वील बी हैविंग पद्मश्री गौरी ईश्वरन, वो भी आइडिया शेयर करेगी नए सेशन के लिए। वील बी हैविंग डॉक्टर संजय रॉय, द फाउंडर ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। सो 10 तारीख को बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग होंगे जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करेंगे कि अगले सेशन में इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़ के एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। So if you have some amazing ideas जो आप अभी भूल गए हो या न दे पाए हो, या जो ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं, you can share all your ideas at talktoblub@gmail.com, क्योंकि आइडियाज ऐसे हैं जो सबको जिंदा रखते हैं। और इस 2020 हमने केवल आइडियाज के भरोसे जिया है, क्योंकि अगर हम इनोवेटिव नहीं होते और नए आइडियाज नहीं सोच रहे होते तो शायद अब तक हम डिप्रेस हो गए होते, और काफी सारे लोग तो शायद इस दुनिया में ही नहीं होते। सो डोंट लेट डिप्रेशन बाइट यू इन एनी वे, बट कोशिश एक ही कीजिए, हर अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, क्योंकि आपसे आने वाली जनरेशंस आपसे यही डॉक्यूमेंट्स मांग रही होंगी, बिकॉज दिस इज द नॉलेज बैंक दैट यू विल क्रिएट, दैट द वर्ल्ड वुड नीड इन द फ्यूचर। सो डोंट लेट दिस टाइम जस्ट गो अवे, try to document it. Before this call comes to an end, a very small story of one such teenager. इस बच्ची ने अपना पहला पेंटिंग एग्जीबिशन 2 साल की उम्र में लगाया था। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ये कभी स्कूल नहीं गई, ये होम स्कूल्ड है। दूसरा एग्जीबिशन 4 साल की उम्र में लगाया, दोनों पूरे सोल्ड आउट। 7 साल की उम्र में इसको न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी ने एग्जिबिट लगाने बुलाया, और वो भी पूरी तरीके से सोल्ड आउट। और ये लड़की अभी केवल 13 साल की है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है और मिलियंस में कमाती है। एंड दैट्स वेयर द एसेंस ऑफ ब्लब वर्ल्ड कम्स इन, एंड शी वाज द कवर पेज ऑफ ब्लब वर्ल्ड सम डेज बैक। दैट्स एलिटा आंद्रे। ऐसे बच्चों से हम बहुत सारे इंटरेक्शंस बहुत सारे बच्चों के साथ कंटिन्यूअस करते रहते हैं। एंड कुछ दिनों पहले एलिटा भी हमारे साथ थी टू शेयर हर स्टोरी दैट व्हाट डिड शी डू। एंड एक चीज जो हम समझ पाए, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है, जो शायद जापानीज एक वर्ड में पूरी तरीके से आ जाता है, व्हिच वी कॉल इकिगाई, द रीजन व्हाई यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो वो बच्चों को जल्दी से जल्दी रियलाइज करा दीजिए, और शायद वो केवल आप ही लोग कर सकते हैं, बिकॉज आप बच्चों से कनेक्टेड हैं, उनके साथ हैं। So thank you so much, everybody. I hope you enjoyed the first session of the Blub World's Global Education Meet and the 112th Roundtable. If you did, and if you want to attend the future sessions, open your audio, say a big yes, and thank you so much, everybody, for being a part and giving us this time from your amazing lives. Thank you, people. Namaste.